In the last few years, India's made remarkable progress in relative to historical norms as well as relative to other parts of the world in its efforts to educate Indians more generally, but women in particular. While those efforts have led to increased education among women, remarkably, at the same time, there has been a drastic drop in the employment of women in the workforce. Specifically, if you look at the percentage of men, adults, who are engaged actively in work, either looking for work or working itself, 82% of men are either working or looking for work. In contrast, only 25% of women are engaged actively in the labor market. Now, if India were to receive a report card on its performance on this gender gap, it would have among the worst ranks in the entire world. Worse than virtually any country in the neighborhood. Afghanistan, Pakistan, Nepal, all have better rankings on this on female labor force participation than India does. So I'm just going to talk to you a little bit about the JAYA Alliance. First, from a larger macro perspective, it's a framework which undertakes 5 different steps to actually get you to the destination. It talks about mass sensitization, where what the panelists spoke about in terms of norms and perceptions and preconceptions and prejudices. How do you sensitize them about that, about the opportunities available? Using the power of a Dharma Life entrepreneur and using counseling and technology. So using their relationships and using technology, merging that together to get their communities to get counseled by the Dharma Life entrepreneur. Moving on to enrolling onto the platform, and this is the platform which we are now rolling out, which is the JAYA app, which gives women opportunities to access livelihood, training, vocational guidance in their areas. So the Alliance also helps them through the DLEs enroll, skill, go through different formats of skilling, and actually arrive at livelihood, which could be being entrepreneurial and starting your own business or doing a job, getting a job. That's the framework of the JAYA Alliance. That's the entire comprehensive framework, and it closes the loop. मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सासू माँ है। मैं धर्मा लाइफ में 2016 से ही काम कर रही हूँ। फॉरवर्ड की ट्रेनिंग की और अपने गांव में आकर करना प्रारंभ किया, कैसे वो प्रदूषण से बचे, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे। और इस दौरान मैंने इंडक्शन, सैनिटरी नैपकिन्स और सोलर लैंप सेल करके जो इनकम आया मुझे, मैंने उस पैसे को बेसिकली अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किए, जो कि मुझे बहुत ही खुशी की बात लगती है। लेकिन सर, जब ये कोरोना का टाइम आया तब दिक्कतें तो अचानक से बढ़ी गई। इस दौरान बहुत सारे करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में जब मुझे धर्मा लाइफ के द्वारा जया प्रोजेक्ट आया है और कैसे फोर्ड फाउंडेशन और धर्मा लाइफ के संयुक्त प्रयासों से महिलाओं के कौशल के बारे में जाना जा रहा है और उनको उनके हुनर के अनुसार प्रशिक्षण देकर उनका तो मैंने इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बेसिकली समय की मांग थी। कोविड के कारण महिलाएं एकदम से आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रयास में लगी रहती थी। तो मैंने इसमें 164 लोगों का समेकीकरण किया। इस दौरान मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि गांव में कभी महिला के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थे, किसी को था तो छोटा वाला मोबाइल था, बेचारे सब इच्छा होते हुए भी प्रशिक्षण के लिए तैयार नहीं हो पाते। बट मैंने इन सबके बावजूद भी 70 लोगों का फॉलोअप किया, उनकी रुचि जानी उसके द्वारा। जस्ट बाद मैंने 35 लोगों का पर्सनल काउंसलिंग भी किया कि आप वीडियो कॉल के जरिए उनको विस्तार से बताया जया प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें मैंने आगे चल के सर मैंने अपने गांव की 5 महिलाओं को अचार का प्रशिक्षण भी दिलवाया कि वो कैसे अपना खुद का आजीविका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के बाद अपना स्टार्ट कर सकती हैं। आज वो सब महिलाएं अपना खुद का अचार बनाती हैं, अपने गांव में और आसपास के गांव में बेचकर अपनी आजीविका चला रही हैं।
और मेरे ख्याल से कोविड के टाइम में जया प्रोजेक्ट एक वरदान की तरह साबित हो रहा है सर। मैं चाहूंगी कि मैं अपने गांव में और अपने समाज में और महिलाओं करूं और आजीविका से जुड़ूं, क्योंकि मुझे धर्मा लाइफ का सहारा मिल गया तो मैं आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरा नाम नीरजा कुक्षाल है, रहने वाली हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, इसमें मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी हैं जो सेना से सेवानिवृत्त हैं, और मैंने एमए हिस्ट्री से किया हुआ है। लेकिन समाज के प्रति, उनके प्रति कुछ काम करने की दिली इच्छा जब बचपन से ही मेरे मन में रहती थी, जो शादी के बाद भी कंटिन्यू चलता रहा। मैं इसके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इसी बीच मुझे एक चिर परिचित महिला मिली, जिन्होंने मुझे ये बताया कि धर्मा लाइफ हमारे सर्जिकल ब्लॉक में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने उनसे संपर्क जोड़ा और उनके साथ मैं जुड़ गई। उनके साथ मैं धर्मा लाइफ के साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ, और धर्मा लाइफ के मैंने काफी प्रोजेक्ट में काम किया। इसी बीच मार्च में जो हमारा नया प्रोजेक्ट आया, जया प्रोजेक्ट, उस समय हमें बहुत उत्साह था, बहुत खुशी थी कि हमने इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। लेकिन भारत में मार्च 25 तारीख को कोरोना काल के चलते हुए लॉकडाउन लग गया और हम लॉकडाउन में फंस गए। उसमें कुछ काम नहीं कर पाए, सब कुछ घर के अंदर करना था। इतनी परेशानियों का सामना करते हुए भी मैंने लोगों से संपर्क साधा, और उनसे संपर्क साधने के बाद मैंने उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें मैंने उन 70 महिलाओं को 70 महिलाओं का संवेदीकरण किया, उनको अपने जो जय प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उसमें मैंने फिर 40 महिलाओं के साथ फोन पर संपर्क करके उनके साथ बातचीत करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, जिस हिसाब से आपका कौशल है उस हिसाब से आप कोर्स कर सकते हो। इसी में मैंने 23 महिलाओं के साथ जो मैं स्वयं व्यक्तिगत उनसे बात करी और उनके सामने व्यक्तिगत सारी बातें रखी कि हम इस जो जया प्रोजेक्ट है इसमें हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, और भी घर बैठे ऑनलाइन घर में बैठ के काम कर सकते हैं। इसमें आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, जो कोविड के चलते हुए हमको घरों में अंदर रखा गया, इसमें हम सारा काम कर सकते हैं। इसी के चलते उसमें से 8 महिलाएं मेरे पास आज कोर्स के लिए तैयार हो रखी हैं। मैंने 5 महिलाओं को जोड़ा, और उन 5 महिलाओं को जोड़ के मैंने उनका एक समूह बनाया और उनकी मशरूम की यूनिट लगाई, जिससे उनको 10,000 रुपए का फायदा होगा। इसी और उनसे उम्मीद करती हूँ कि हमारी उत्तराखंड की महिलाएं या पहाड़ों की महिलाओं के उत्थान में आप हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अनीता देवी, मैं रांची झारखंड से हूँ, और मैं पिछले 2 साल से धर्मा लाइफ से जुड़कर महिलाओं की उन्नति और उनकी विकास के लिए कार्य कर रही हूँ। पर बीच में कोरोना आ गया। कोरोना आने के कारण पूरे दुनिया लॉकडाउन हो गया, सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए, सारे कितने देश की पूरे जनता की चली गई रोजगार, घर में लोग बंद हो गए, परेशान हो गए। पर धर्मा लाइफ के माध्यम से एक ग्रुप बनाया संग्रामक का, उसमें अखबार के जरिए, टीवी के समाचार के जरिए, मोबाइल की न्यूज के जरिए कोरोना से प्रेरित करते हुए मैंने एक मनोरंजन भी, इसी के साथ एक और जया परियोजना धर्मा लाइफ से आया, जिसे हमने जाना, बहुत अपना सा लगा। मुझे यूं अपना पुराना जिंदगी याद आया कि मैंने जो संघर्ष किया, मेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई, उस कठिनाई को मैं अपने महिलाओं, गांव की महिलाओं को कतई नहीं भोगने दूंगी, कतई नहीं गुजरने दूंगी, क्योंकि जया परियोजना ऐसी परियोजना है जो महिलाओं को जीने की एक शक्ति देती है, किसी के आगे ना झुके ऐसी एक प्रेरणा देती है। मैं इसी उद्देश्य के साथ जया परियोजना के माध्यम से एक ग्रुप बनाई। उस ग्रुप में 106 लोगों को मैंने संवेदीकरण किया। उस संवेदीकरण में कहते हुए मैंने 75 लोगों को फॉलो करके उनकी गुण को, उनकी जो कौशल है, उनकी जो छवि है, जो उनको रुचि है, उसको जानने का प्रयास किया। धर्मा लाइफ को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक कुशल उद्यमी बनने का अवसर प्रदान किया। मैं धर्मा लाइफ से और भी उम्मीद करती हूँ कि और ऐसी परियोजना लाए और हम महिलाओं को सशक्त करें। जय धर्मा, विजय धर्मा। धन्यवाद। India has one of the lowest labor force participation rates in the world, and this has been exacerbated by COVID. Some of the entrepreneurs mentioned and others touched on. Women were anyway less likely to be in the labor force, and with COVID, this has only made things worse. Conditional on being employed, women are now actually less likely to be in the workforce, more likely to have lost jobs, more likely to have faced closures for their businesses due to COVID, having exacerbated some of the issues various panelists discussed, things like unpaid care work, domestic duties,
safety and mobility, so access to transport, supply chains, access to financing. Digital gender gaps remain. So even though technology is a contributor to the kinds of jobs that Dharma Life has, as Anita Devi mentioned, access to technology still remains an issue for many women. And one of the things that we didn't touch on was gender norms, the kind of social pressure that Anita also touched on, which is that there is still strong norms around gender roles, especially for married women. More than half of India actually disapproves of women working if their husband can provide for the family. And with rising family income, we've actually seen women's labor force participation drop. For JAYA Alliance, really look forward to the fact that women are also going to be building sort of acceptance within communities, enabling an environment for women in which they can work freely and really help fill in some of the gaps that women's enterprises and workforce are facing. We are an organization that really is part of the UN family, and our mandate is to really empowering women and to drive gender equality forward. And as you've heard already, one of the things that obviously as an organization like UN Women is very dear to our heart is that we have seen that women less and less participate in the world of work in India. And as an organization, we have done a lot of research and trying to understand where this comes from. One of the things we have seen and what we have learned is the barriers are not different now in COVID. It's just becoming more stronger and it's more accelerated than before. And things that we see, for example, is that lots of women do not join the workforce because they are always feeling they are in unsafe workplaces. The work conditions very often don't allow them to be there. We also see the social cultural context where very often, and I think this is not something only in India, but also in other countries, where women still are very often are responsible of domestic obligations, taking care of families, children, and doing all the domestic work. But what we also have learned in this research that there are positive signs and that there are women that are going into entrepreneurship, but even these women that are so kind of powerful and really take this journey are facing lots of hurdles. We are a global professional services firm. We have over 300,000 employees in over 150 countries, and our purpose is to build a better working world. Last year, we launched a bold ambition to positively impact the lives of 1 billion people by 2030 through a new program that we call EY Ripples, creating a ripple effect in our communities around the world. And we aim to achieve that by extending the value of our EY knowledge and our networks on a pro bono basis to people and places that we might not otherwise reach through our typical commercial business. And that includes supporting young and underserved women to develop the transferable skills that are required to thrive in the workforce of the future, and also helping entrepreneurs who are really role modeling gender inclusion to scale their businesses. And technology can be a huge enabler, I think, to women's participation in the workforce due to the flexibility, the speed and the reach that can be achieved. And I think the JAYA Alliance, in the incredible work that these entrepreneurs are doing, is a fantastic example of that. But it's also important, I think, to recognize that technology itself is not good or bad. It's an enabler. And so how we apply it can be either inclusive or exclusionary. And EY and UN Women have actually joined forces to create innovation principles to help businesses of all sizes to empower more women through technology. From my perspective, what's important is that women, entrepreneurs, organizations understand what they can achieve through their own work to empower other women, understand what their strengths are, but also understand where they can get support from others, and then actively seek out other people or organizations with complementary capabilities. Program that we are most proud of, and the one that we've been putting most of our resources behind, is the program around gender equality. So supporting women, especially in our region,
address issues of violence, and also access equal opportunities. So when Dharma Life came to us and spoke about the programs that they're doing, we thought it a very, very, very good fit to the work that we're doing. Over the last few months, we have also been talking about how if some of the focus can be very, very direct and focused on those women and those communities that are the most marginalized, and if we can work with them to give them access and opportunities, that'll place them better to enter the workforce. As a foundation that is strongly invested in this idea, we fully support this initiative and look forward to working with all of you. Hopefully those attending the call, and some of you may be friends and colleagues of yours who are not able to join this call, so would really look forward to having these conversations. Thank you once again.